Hello everyone, very good morning to all of you. My name is Samrat Mishra. So last time we discussion start करते Indian polity constitution article 12, 13, 14, 15 I discuss करचंती. Continuously one by one important articles I will discuss. So today I will discuss article 19 of the Indian constitution. This is one of the most important article that you need to understand and remember as well. So those who are not in Unacademy Plus, they may subscribe to Plus by using the referral code EGVOICE to get 10% off of a new subscription amount. So let's understand Article 19. So Article 19 is about what? It is related to protection of certain rights regarding freedom of speech and other rights as well. There are. Article 19 guarantees 6 rights. Earlier there were 7 rights, and we have discussed through 44th Constitutional Amendment Act. One right was deleted from this, so now it has only 6 rights. The first and the most important right is right to freedom of speech and expression. Speech or expression or meaning kon. So before that, we need to understand why to protect freedom of speech. Freedom of speech को protect करिवार reason कौन? The first and the most important function is to have the active participation in the democracy. How speech and expression is related to democracy? Because in a democratic country or in a democratic process, the voice of everyone matters, whether the person belongs to the majority group or the person belongs to the minority group. Always the participation matters, and how a person can express himself through speech. Through speech, a person can express himself. But apart from speech, there are other means of expression as well. मानिना तुम कहल जने पेंटिंग थ्रू रे एक्सप्रेस करियो चाहूची, जने कार्टून थ्रू रे एक्सप्रेस करियो चाहूची, जने डांस फॉर्म रे एक्सप्रेस करियो चाहूची, इवन इफ साइलेंट रही भी निजो एक्सप्रेस करा जाय पारे. So all these things are covered under freedom of speech and expression, and the reason for which we have given our freedom of speech and expression is there in the Indian Constitution is to promote active participation in the democracy. In a democratic country, active participation को promote करिया पाई अछि. The second is to discovery of truth by the open discussion. Again, open discussion is related to democracy. Open discussion is only promoted by a democratic country. So it is truth discover पाई हमको express करिया को पड़ियो निजो को. So for that purpose also speech and expression is required. The next is for expressing belief and political attitudes. Belief कौन से भी टाइप रो बिलीफ हे पारे, जनकर सोशल बिलीफ, इकोनॉमिक बिलीफ, पॉलिटिकल बिलीफ, रिलीजियस बिलीफ हे पारे. सो ए सब को एक्सप्रेस करिया पई वी नीड स्पीच एंड एक्सप्रेशन. अगेन फ्री स्पीच एज एन एस्पेक्ट ऑफ सेल्फ फुलफिलमेंट एंड डेवलपमेंट. माने नंतु हम देखले कि जने पोएट अछि, तो पोएट ऊपर जते हमें कांस्टेंट रखिबा, रेस्ट्रिक्शन रखिबा कि से ए टाइप रो पोएट लिखि परिवनी बा पोएट कहि परिवनी, पोएट डिस्कशन करि परिवनी. इट मींस आमे तार पर्सनल डेवलपमेंट ऊपर कांस्टेंट लगौचंती. अर्लियर टाइम्स रे सुनिथिबो जेमति थिला हमर राजा मानक टाइम रे व्हेन द king was the law. At that point of time there was no freedom of speech and expression. It means the poet will only be allowed to say something when the king agrees to it. जेतोल king चाहिबे से कहयो बा लिखिबो किछि, जेतोल king न चाहिबे से लोक लिख परिवनी. So what does that mean? कि हम से लोकर डेवलपमेंट ऊपर सेल्फ फुलफिलमेंट ऊपर कांस्टेंट लगौचंती. So not to have self fulfillment or development, we need freedom of speech and expression. So basically these are the parts of a democratic country. Different rights भितर freedom rights, freedom of speech and expression which is most important. Now we will understand freedom of speech and expression which has been given there in article 19(1)(a) of the Indian Constitution. So freedom of speech and expression include करछि कोना हम already discuss करले कि ये include करछि any form of speech by expression. निजर व्यू को एक्सप्रेस करबा बा आउ कार ये तीटा कथा एक्सप्रेस करछि. फर्स्ट इज एक्सप्रेसिंग वन्स ओन व्यू एंड द सेकंड वन इज एक्सप्रेसिंग अदर्स व्यू. निज व्यू को हम एक्सप्रेस करबा प्लस आउ कार व्यूज को भी हम एक्सप्रेस कर परिबा. तो ये बुझ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऊपर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अप टू हाउ मच एक्सटेंड फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज एन्जॉयड. मुकली स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम अछि, इट मींस मु गाली देबा को स्टार्ट करियो जणो.
So these things are not allowed. Why it is not allowed? Because it violates the rights of another person. Je paryanto ye au janko rights ko violate na karchi se paryanto I can enjoy speech, freedom of speech and expression. And when it will violate, jo case re violate kariyo start kariyo, from that point of time the freedom will be taken away from me, ba mate freedom of speech and expression miliboni. So next देखिबा हमें article 19(1)(a) अंडर रे आउ कोन आर्टिकल माने आउ कोन explicitly को फैक्ट ऑफ फिगर आसुचंती. नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ द प्रेस. प्रेस कोन करछि बेसिकली प्रेस शेयर्स व्यूज. कहार व्यू शेयर करछि ना इट शेयर्स ओन व्यू प्लस व्यू ऑफ द पब्लिक. सो जेहेतु हम देखले फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नो मीनिंग होछि कि शेयरिंग वन्स ओन व्यू और शेयरिंग अदर्स व्यू. नाउ प्रेस जे निजर व्यू शेयर करछि बा पब्लिक रो व्यू शेयर करछि. सो फॉर दैट पर्पस फ्रीडम ऑफ प्रेस आल्सो कम्स अंडर स्पीच एंड एक्सप्रेशन. द नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन. Freedom of information कहले हम कोन बुझंती ना information are related to government activities. Why it is required? Because it is required to establish good governance, but transparency in the governance पे we need freedom of information. The next is freedom of silence. मु पूर्वर कहि जे कि निजको एक्सप्रेस करिवार गोटे वे होची साइलेंट रहिया मध्ये निजको एक्सप्रेस करिवार गोटे वे. सो पर्सन कैन बी साइलेंट. The next is freedom against बंद. तो एटी बंद करा जाय पारिबो, बट फ्रीडम अगेंस्ट स्ट्राइक, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आसु नाही. तो ये केवल बंद करा जाय पारिबो बा बंद को अलाउ करा जाय पारिबो. नेक्स्ट राइट टू टेलीकास्ट. गवर्नमेंट मीडिया ऊपर मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल केवल गवर्नमेंट नाही, रादर प्राइवेट सेक्टर भी एठी एडवर्टाइज प्राइवेट सेक्टर भी एठी टेलीकास्ट करि परिबे. सो टेलीकास्ट ऊपर केवल गवर्नमेंट रो मोनोपोली न रखिबा पई right to telecast it achi, so that private sector bhitere interfere kari paribe. The next is right to commercial advertisement. Right to commercial advertisement. So commercial advertisement कहले हमें कोन बुझंती, and why commercial advertisement is there? Originally commercial advertisement freedom of speech and expression under आसु नथिला, but later नि आसीबार कारण कोन ना मझिरे गोटे केस आसिला सुप्रीम कोर्ट रे जो रिगार्डिंग कि commercial advertisement न्यूज़पेपर आसीबा दरकार ना आसीबा दरकार नै, whether that is a part of the fundamental right or not. तापर एग्जामाइन कले सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट रे आसिला कि जदि commercial advertisement न आसुची आमे न्यूज़पेपर रो प्राइस देखिबा, then it will be quite high in the market. मार्केट रे यार प्राइस अधिक होय जिवो. जदि मार्केट रे प्राइस अधिक होय जाउची, वर्तमान जेम मैक्सिमम 10 रुपीस रे पाउछन गोटे न्यूज़पेपर, बट जदि ये ऑन डेली बेसिस 50 रुपीस 60 रुपीस हे गला, so that citizens will never buy newspaper. For that purpose आमे पूर्वरु पढिचंदी कि राइट टू नो, एंड राइट टू नो ऑटोमेटिकली वायलेट हबो जेतबेले न्यूज़पेपर हम पाखरे पहुंच परिबोनी. सो टू प्रोटेक्ट राइट टू नो, right to advertisement is there in the freedom of speech and expression. So advertisement हवा द्वारा commercial advertisement basically हवा द्वारा profit कोन होय ना, जति कि profit आसे से सब को utilize करा जाय परिबो. So that newspaper हम पाखरे कम टंका रे पहुंच परिबो, बेसी टंका रहइबो newspaper प्राइस. नेक्स्ट इज right against tapping the telephonic conversation. Telephonic conversation जदि दु जन डिस्कशन करछन्ते ताले टेलीफोन को टैप करिवा सुनिथिबे बहुत टाइम रे न्यूज़ रे कि टेलीफोन टैप करछि, and police has this authority to tap the telephone, all those things. This is against freedom of speech and expression. Freedom of speech and expression against रे. The next is pre censorship upon the newspaper. Pre censorship कहले हम कोन बुझंती, पब्लिकेशन हवा पूर्व कोनोसी न्यूज़ पब्लिकेशन हवा पूर्व जत्ता को सेंसरशिप हमें चेक करिया को वेदर दैट इज ट्रू और फॉल्स, कि ताको हमें सेंसरशिप लगेबा ता ऊपर से पब्लिश हवा द हेई परिबो ना न हेई परिबो, ताको हमें सेंसरशिप बोली कहंती. सो प्री सेंसरशिप माने न्यूज़ पब्लिश हवा पूर्व जति गवर्नमेंट स्क्रूटिनाइज करिया पड़छि गवर्नमेंट को, ताले हम ताको प्री सेंसरशिप कहबा. एंड द क्वेश्चन इज how far it is acceptable कि before publication we should provide censorship to the newspaper. ये कहूँ कि प्री सेंसरशिप इज नॉट अलाउड, रादर जदि कोन प्रकार प्रॉब्लम आसुची कोन टाइप रो फॉल्स न्यूज आसुची ता ऊपर केस करा दे परिबो, बट न्यूज आसीबा पूर्वरु कोन प्रकार प्रोविजन नाही हम पाखरे जोतिर हम से न्यूज को एग्जामिन करबा, एनालाइज करबा कि ये ट्रू रिपोर्ट ना फॉल्स रिपोर्ट. So this is all about freedom of right against imposition of pre censorship on a newspaper. Next, right to picketing and right to strike. Right to picketing is there, but right to strike is not there. Right to picketing is the fundamental rights, but right to strike is not a fundamental rights. Now the question is, how far Article 19(1)(a) is enjoyable
or acceptable to a person को समय पर्यंत ताकू दिया जीवो एटी गोटे कंडीशन अछि reasonable restriction. In my last class I discussed regarding different provisions of different characteristics of fundamental rights, and these are not absolute, rather they are qualified, because the state has authority to put significant restriction upon them, but reasonable restriction पके परिबो. तो एई कारण हम fundamental rights मानकु qualified कहउछन, and they are not absolute. को condition ये करा दे पारे. The first is to protect sovereignty and integrity of India. यदि कोनोसी समय इंटीग्रिटी र कथा आसुची, sovereignty र कथा आसुची, and due to the speech and expression of a person, if sovereignty and integrity of the country is going to be violated, at that point of time we can put, or the state or the government can put, reasonable restriction upon that. The next is security of the state. Security of the state. जदि कोनोसी समय state insecure हो जाउची बा कोनोसी प्रकार expression form of expression पई state र security नष्ट होची, मानि न तो जणे DRDO रे काम करछि, सो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अनुसार से सब जहा प्राइवेसी अछि शेयर कर देबे कि ए टाइप रो टेक्नोलॉजी रे काम चलछि, हम एमती मिसाइल पर काम करछु, सो इट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट प्रति प्रॉब्लम अछि. एई कारण रे भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऊपर लगा जाय पारिबो. The next is friendly relationship with the foreign state. Basically, it discusses related to bilateral relationship and multilateral relationship of India. जदि कोनोसी प्रकार स्पीच एंड एक्सप्रेशन कोनोसी फॉरेन कंट्री सहित एनिमिटी क्रिएट करूची बा कोनोसी फॉरेन कंट्री जो हमर फ्रेंड लिस्ट अछि, फ्रेंड कंट्री अछि, ता सहित फ्रेंडशिप रो एक्सटेंड को कम कर दोची, ताहले मथे या पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा जाय पारिबो. द नेक्स्ट इज पब्लिक ऑर्डर. पब्लिक ऑर्डर कहले हम कोन बुझंती, जदि कोनोसी समय कोनोसी स्पीच बा एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर को नष्ट करछि, पब्लिक ऑर्डर को भांगी दोछि, बा कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम क्रिएट करछि अमंग द सोसाइटी, इश्यूज क्रिएट करछि इन द सोसाइटी, इट इंस्टिगेट करछि कोनोसी प्रकार क्राइम को, ताले ए समय मध्ये से स्पीच और एक्सप्रेशन ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लागि पारिबो. द नेक्स्ट इज डिसेंसी एंड मोरालिटी. डिसेंसी एंड मोरालिटी कहले हम कोन बुझंती, मानिना तो ऑल ऑफ सडन अ पर्सन विल स्टार्ट स्कोल्डिंग अनदर पर्सन, तो एठी डिसेंसी और मोरालिटी रे कमी रहउची, सो दैट हमें स्पीच और एक्सप्रेशन को सही एक्सटेंड पर्यंत यूटिलाइज करि परिबा बा यूज करि परिबा जो पर्यंत हम पाखरे जो पर्यंत हमें मोरालिटी एंड डिसेंसी एंजॉय करचंती. सो इमोरल एक्टिविटी बा इनडिसेंट एक्टिविटी हमें करि परिबानी थ्रू स्पीच एंड एक्सप्रेशन. द नेक्स्ट इज कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहले हम कोन बुझंती, recent case आसीथिला related to contempt of the court, प्रशांत भूषण केस सुनिथिबा आपण माने. सो contempt of court रे when a person disrespect to the verdict of a court, ताको हम contempt of the court कहंती. अगेन ये दुईटा टाइप रो अछि, सिविल contempt and criminal contempt, या पर हम डिस्कस करबा. सो 19(1)(a) अनुसार यदि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ने सुप्रीम कोर्ट रो कोनोसी वर्डिक्ट को कहि एग्जामिन करूची बाकी एनालाइज करूची, and if that goes against the court, ताको हम contempt of the court कहबा. Now ये एक्चुअली गोटे डेडलॉक सिचुएशन क्रिएट करूची. यदि 19(1)(a) हमको स्पीच एंड एक्सप्रेशन देची, एंड दैट टू सेपटे कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट अछि, जेमते हम कोर्ट रो अगेंस्ट न जानती, तो या ऊपर भी डिबेट चली कि क्रिमिनल कंटेम्प्ट को हटा जिवा दरकार. मेनी डेवलप्ड कंट्रीज हमन को क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट नाही, सिविल कंटेम्प्ट ओनली अछि. तो या पर भी हम डिस्कस करबा, तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऊपर हम डिस्कस करबी. सो कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट जो समय आसे से समय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऊपर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा जाय पारिबो. नेक्स्ट इज इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस. इनसाइटमेंट टू एन ऑफेंस कहले कोन बुझंती, मु जदी इंस्टिगेट करछु, मु किछि स्पीच देली, किछि एक्सप्रेशन देखैली, so that किछि लोक इंस्टिगेट हेले किछि क्राइम करिया पई बा किछि गोटे ऑफेंस करिया पई से माने इंस्टिगेट हे गले, से समय मध्ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा जाय परिबो टू प्रिवेंट दैट क्राइम. नेक्स्ट we will discuss some other dimensions of article 19. It is apparent that the right to information was not spelled out as a separate right under Article 19. Right to freedom of speech and expression enshrined in the Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. It includes the right to information. So RTA ऊपर सुनिथिबे समस्त right to information. Right to information आर authority derive करछि कोठु Article 19 of freedom of speech and expression. No right to information, why it is required? It is required to provide गुड गवर्नेंस बा हमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिया पई, गवर्नमेंट रे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करिया पई हमको आरटीआई दरकार. एई कारण पई आरटीआई एक्ट आस्थिला 2005 रे. 1975 स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण केस, एथिरे राइट टू नो फ्रीडम ऑफ स्पीच अंडर आसुची बा राइट टू नो
derives its authority from the freedom of speech बोली declare करा गला. So why right to know again is required? Right to know about the government activities. ये भी transparency provide करिवो कि government activities government good governance पे काम करूची ना काम करना है. The next 1981 ने गोटे केस आसिला जार नाउ SP Gupta versus Union of India case, and in this case the verdict of or the concept related to open government has been given. Open government means transparent government, and a verdict ऊपर बेस करी 1981 ने verdict ऊपर बेस करी कि parliament 2005 रे right to information act आनिथिले. Next, and the important topic we should discuss while discussing article 19 is sedition. Many times आपको news रे अपन माने देखिथिबे कि sedition कौन, and you will finding many politicians they are being booked or charged for sedition. Recently Kanhaiya Kumar case you can take as an example. या व्यतीत recent arrest in Bangalore, Kashmir, on the ground of protecting against the Citizenship Amendment Act by raising pro-Pakistan slogans. All these things has initiated or reignited the debate around the sedition laws. Sedition law, section 124A of the Indian Penal Code. ये sedition has been defined in this regard. Sedition has been defined as any activity or any action that brings or attempts to bring hatred or contempt towards the government of India. Either government of India towards कोई hatredness spread करू बा contempt spread करू ताको हमें sedition बोली कहबा. And for the first time section 124A it was drafted by Thomas Babington Macaulay. ये IPC जेतोळे आसला 1870 रे से समय आसितला. पनिशमेंट जदि देखबा ये गोटे नॉन बेलेबल ऑफेंस, एथिरे बेल दिया जाय परिबो नाही. जो लोक अगेंस्ट सेडिशन चार्ज लागे इन जनरल द पर्सन कैन नॉट अप्लाई फॉर द गवर्नमेंट जॉब. प्लस से लोक को पासपोर्ट मिल परिबो नाही. एंड व्हेनेवर इट इज रिक्वायर्ड द पर्सन हैज टू प्रेजेंट इन द कोर्ट इटसेल्फ. जेतोळे कोर्ट रे डका दिबो से लोक को प्रेजेंट रहिया को पड़िबो. जदि फेमस सेडिशन ट्रायल में देखिबा इंडिया रे हिस्ट्री ताले जोगेंद्र चंद्र बोस 1891 ताका अगेंस्ट रे लागितला सेडिशन चार्ज. नेक्स्ट अगेंस्ट बाल गंगाधर तिलक 3 sedition trials has been taken place. 1922 यंग इंडिया रे गोटे आर्टिकल पब्लिश करिया पई महात्मा गांधी का अगेंस्ट मध्ये सेडिशन चार्ज लागितला. से समय जो सेडिशन लागितला दैट इज सेपरेट, एंड वर्तमान जो सेडिशन चार्ज लागुची दैट इज कंप्लीटली सेपरेट. वर्तमान जहा लागुची ए जो एंटी इंडिया स्लोगन दवा पई लागुची, बट से समय रे एंटी ब्रिटिश स्लोगन दवा पई लागितला. इंडिया को डेवलप करिया पई, इंडिया को इंडिपेंडेंट करिया पई से माने चेष्टा करथले. बट इन टुडेस टाइम पीरियड द मीनिंग हैज कंप्लीटली चेंज्ड. The next and the most important case सबବେଳେ मन रखियो रमेश थापर केस. रमेश थापर केस, केदारनाथ केस, केदारनाथ सिंह केस बा कन्हैया कुमार केस एथिरे सेडिशन लॉ को रीडिफाइन करा जायछि बा सेडिशन को सेडिशन नो प्रॉपर डेफिनेशन प्रोवाइड करा जायछि. एठी कहै दउछि कि सेडिशन कहला हम कोन बुझंती व्हेन any freedom of speech and expression if that violates or disrupts the public order बा ये किछि अटेम्प्ट नउछि टू ओवरथ्रो अ लॉफुल गवर्नमेंट. लॉफुल गवर्नमेंट मींस डेमोक्रेटिक वे रे गवर्नमेंट हेछि, इलेक्शन हेछि, इलेक्शन जितिला परे मेजॉरिटी आसिला परे गवर्नमेंट को गवर्नमेंट एस्टैब्लिश हेछि, एंड इफ अ सेक्शन ऑफ द सोसाइटी they are interested to throw away that legitimate government or lawful government through any speech and expression ताला में ताको sedition बोली एठी हमें कहबा. The next is threatening the security of the state of public. Threatening the security of the state of the public. Public रो state को जदि भी threaten करचंती ताले मध्ये ये sedition under रे आसुची. So sedition is important in this regard. जेतु ए रिलेटेड इश्यूज आसुची, सो मन रखिया पड़िबो, अपन मान को जानिया पड़िबो सेडिशन कोन. पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन ये बहुत डायनामिक टॉपिक. It has relevance directly. It has relevance upon the socio-economic development of the country, political environment of the country. So whenever or whatever you are watching, observing in the society, in the economy, in the political dimension, so apply all those things that you have studied in the Indian constitution to Indian context. जेमते हमें सेडिशन पढ़िले यार लाइव एग्जांपल सहित देखिले डिस्कशन कले कि केमती कन्हैया कुमार केस आसिला, कन्हैया कुमार केस रे कोन कोन प्रॉब्लम अछि बा केमती राइट टू कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट दरकार ना दरकार नै, ई एंगल रे देखिबे. लक्ष्मीकांत बुक रे अनेक जिंस तो देइछि पॉलिटी रे, स्टिल लक्ष्मीकांत इज साइलेंट अबाउट मेनी मोर थिंग्स. ई सब जिंस को ई गैप को सब मिनिमाइज करिया पड़ियो. ओनली लक्ष्मीकांत रे जति जिंस अछि डेफिनेटली आई एग्री कि दिस इज अ गुड बुक and it is sufficient to qualify the examination, but as far as different concepts are concerned related to constitution, related to legal environment in India or related to interpretation of the statute, तो ए सब जगह हमको आउ किछि इनपुट दरकार. ए सब को मिसै कि पढिबे दैट विल बी बेटर. जहा हमें डिस्कस करछंती. प्लस
जहाँ लक्ष्मीकांत रे अछि अपार्ट फ्रॉम दैट डिटेल डिस्कशन प्रत्येक कोर्स रो डिटेल डिस्क्रिप्शन अनअकैडमी प्लस रे रहउची जो माने प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं नांती दे में सब्सक्राइब टू अनअकैडमी प्लस सो दैट कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी इंडियन इकोनॉमिक्स सोशल डेवलपमेंट सोशल इश्यूज इंटरनल सिक्योरिटी ये सब सब्जेक्ट ये सब टॉपिक कंप्रेहेंसिवली मु कवर करिवे अनअकैडमी प्लस रे एठी हमें किछि टॉपिक डिस्कस करूचंती इन यूट्यूब सेशंस बट सेठी प्लस रे हमर गोटे सिस्टमैटिक वे रहइबो कंप्लीटली कि कोन कोन हमर सिलेबस अछि एंड सिलेबस अनुसार हमको कोन कवर करिवा दरकार द नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर आर मेनी एजुकेटर्स दोज हु विल बी गाइडिंग यू थ्रू आउट योर प्रिपरेशन हिस्ट्री ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स पॉलिटी व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड जहा सब्जेक्ट अछि आपनकर all the subjects will be covered under a single roof tenu Unacademy plus रे मते सब्सक्राइब करिया पई the link I have given in the description box और link को अपन फॉलो करि परिबे so directly subscription पई फॉलो करि परिबे मते फॉलो करिया पई Unacademy रे मते फॉलो करि परिबे so that notification अपन मन पाकर पहुंच जिवो कि नियर फ्यूचर रे जदि मोर कोनस प्रकार क्लास आसे YouTube क्लास बा स्पेशल क्लास So this is sedition. The next time we discuss करूँ 19(1)(b) of the Indian Constitution. So 19(1)(b) कहूँ कि right to assemble peacefully without arms. Right to assemble peacefully without arms. यार meaning कौन? ये कहूँ जो assembly हमें create करिबा that must be peaceful and harmonious. ये पीसफुल मैनर रे हवा दरकार एंड हार्मोनी प्रोवाइड करबा दरकार कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन होइबा दरकार ना कि हम से स्ट्राइक करबा स्टार्ट कर दबा आर्म्स एंड एम्युनिशन यूज करबा स्टार्ट कर दबा हड़ताल करबा स्टार्ट कर दबा भंगारुजा करबा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी ये सब जिंस इंक्लूड हो नाही राइट टू असेंबल अर्थ इट ऑलवेज इंक्लूड्स पीसफुली असेंबल करबा plus without any arms and ammunition हमें stand करिबा the next is must be unarmed and not threatening the safety of the people लोक मानकर सेफ्टी ऊपर क्वेश्चन न आसुथिबा दरकार and unarmed रहबा दरकार then reasonable restriction can be imposed under clause 3 of the article 19 यहाँ पर assemble right to assemble ऊपर मध्ये reasonable restriction लागि परिबा ये absolute right नहे rather ये qualified rights बोली मु डिस्कस करि सारिछि so whenever required state is there or the government is there to put some reasonable restriction upon that next right to form associations or unions or cooperative societies अच्छा freedom of assembly ऊपर हमें आउट के देखिबा आउट जिंस कहबी freedom of assembly ऊपर reasonable restriction को समय लागि परिबो now when there is a threat to sovereignty and integrity of India or when there is a threat to public order से समय रे यहाँ पर reasonable restriction लागि परिबो तो या सहित आउ दुटा सेक्शन हमकु जानबा दरकार गोटेला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड रो सेक्शन 144 ऑफ द सीआरपीसी 1973 ये कहूची कि मैजिस्ट्रेट गोटे रिस्ट्रेन करि परिबे गोटे असेंबली को बा गोटे मीटिंग को जेते बेले मैजिस्ट्रेट विल फाइंड दैट देयर इज अ रिस्क कोन पय रिस्क अछि बा डेंजर अछि कार लाइफ प्रति ह्यूमन लाइफ प्रति डेंजर अछि बा ह्यूमन हेल्थ प्रति डेंजर अछि बा सेफ्टी प्रति डेंजर अछि से समय मैजिस्ट्रेट एटी सेक्शन 144 यूज कर परिबे द नेक्स्ट इज सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड ये कहूची ये 5 बा 5 रु अधिक लोकंकर असेंबली को ये अनलॉफुल बोली डिक्लेयर करछि को समय रे अनलॉफुल बोली या को समय डिक्लेयर करछि ये फर्स्ट कहूची कि जेतेबेले 5 बा 5 रु अधिक लोक असेंबल होचंती एंड असेंबल कोन पय होचंती ना गोटे लीगल प्रोसेस अगेंस्ट रे जिवा पय चाहउचंती बा गोटे पब्लिक सर्वेंट जदि किछि काम करछि पब्लिक सर्वेंट अगेंस्ट रे जिवा पय चाहउचंती पब्लिक सर्वेंट को काम करे दोनांती बा मिसचिफ क्रिमिनल ट्रेसपास करिया को चाहउचंती क्रिमिनल ट्रेसपासर माने आउ जन को घरे जबरदस्ती पसिया को चेष्टा करबा क्रिमिनल ट्रेसपास करिया को चाहउचंती बा थ्रेटन दबा को चाहउचंती थ्रेट दोचंती का गोटे गवर्नमेंट ऑफिशियल को दोचंती से समय 5 बा 5 रु अधिक लोकंकर असेंबली को अनलॉफुल पर डिक्लेयर करा जाय परिबो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 141 ऑफ द इंडियन पेनल कोड the next is right to form association or union or cooperative societies right to form association union or cooperative societies यार मीनिंग बहुत वाइड बहुत वास्ट मीनिंग यार तो ये कहूची कि डिफरेंट टाइप रा एसोसिएशन हमें फॉर्मेशन करि परिबो जेमति कि पॉलिटिकल पार्टी क्लब देखुचंती सोसाइटीज देखुचंती ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज एंटरप्रेन्योरशिप कंपनीज ट्रेड यूनियन ये सब हमें प्रोवाइड करि परिबो ये सब को प्रमोट करूची इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ताले एटा को प्रमोट करिवार मीनिंग कोन मीनिंग
कि एटी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी रहिबो लोक मानक भितर हार्मोनियस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो ये एथि पई प्रमोट करा जाउची फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को हां या सहित एटी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन मध्ये अछि ये जो रीजनेबल एसोसिएशन हमें कहबा काली कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म माने अछंती बा हम कहि हिजबुल मुजाहिदीन लक्सरी तोइबा ए माने एसोसिएशन प्रोवाइड करचंती सो ये कोन लीगल बा लॉफुल एसोसिएशन हबो अंडर आर्टिकल 19 ए माने हेबे नाही बिकॉज़ they are the threat to the security of the country but they are threat to the sovereignty of and integrity of India. That is why they are not allowed in this scenario. The next is exception एटी रहला कोन ना it doesn't mean कि हमें गोटे एसोसिएशन फॉर्मेशन कर दोचन माने ये न कि राइट टू रिकॉग्निशन आकु रिकॉग्नाइज करियो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करिया पई बाध्य नहीं सो मानक पाखर स्ट्राइक करिया पई मध्ये अधिकार नहीं राइट टू स्ट्राइक दे डोंट एंजॉय. The next is right to move freely throughout the territory of India. It has been given in Article 19(1) Clause D of the Indian Constitution. So, territory of India रे free movement या ऊपर reasonable restriction definitely अछि. बर्तमान मु कहिबी कोविड-19 रे हमर मूवमेंट ऊपर रेस्ट्रिक्शन लागि छि बाय लॉकडाउन एंड शटडाउन कि लॉकडाउन ने बाहर को जाई परिबनी शटडाउन पीरियड रे बाहर को जाई परिबनी तो एठी जने केस करिवो कि मोर माय फंडामेंटल राइट हैज बीन वायोलेटेड बिकॉज़ माय देयर इज रेस्ट्रिक्शन अपॉन माय मूवमेंट एंड व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट. Yes, it is a fundamental right and there is restriction upon the movement of the fundamental related to enjoyment of the fundamental rights, but the thing is that this fundamental right is never absolute. This is qualified and on the basis of public health the government has imposed reasonable restriction upon the right to movement of the people. तो एई जगह हमें कहबा कि fundamental rights हमें enjoy करि परिबा नाही कारण कोन enjoy न करिवार ना गवर्नमेंट एटी पब्लिक हेल्थ ग्राउंड रे मानि ना जने कोविड इन्फेक्टेड अछि सो ऑटोमेटिकली व्हेन द पर्सन विल इंटरैक्ट विथ अदर पर्सन्स देन इट विल स्प्रेड फॉर दैट पर्पस देयर इज रेस्ट्रिक्शन तो आक में राइट टू मूवमेंट बा राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया यार एक्सप्लेनेशन बोली कहि परिबा. Next is right to reside and settle in any part of the territory of India. Article 19(1) E discuss करूची कि इंडिया रा कोन जगह में सेटल कर परिबा एंड रेजाइड कर परिबा या सहित अगेन एटी मध्ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन अछि त पूर्वरु जेमति बिफोर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 35A and 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें सेटल करि परतले कोठी इन कश्मीर रे रहि परतले बट वर्तमान एब्रोगेशन परे आउ नाही एब्रोगेशन परे रहि परिबे बट पूर्वरु एब्रोगेशन पूर्वरु कश्मीर रे सेटल हे परिबेनी सो एई जगह रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन थिला बा शेड्यूल ट्राइबल रीजन अछि ए जगह सेटलमेंट हे परिबोनी आपनकर कोन बाय सेटल हे परिबेनी द रीजन इज सेमानकर कल्चर को प्रोटेक्ट करिया पय हम पाखर ऑलरेडी बहुत गुडे लॉ अछि तो सेई जगह हम जबरदस्ती एसटी रीजन ने पसी के सेटल हे परिबा नाही. नेक्स्ट Article 19(1) और Article 19(1) दीटा जिन सामने देखिले 1D and 1E जहाँ डिस्कस करले they are complementary to each other. Next, right to practice any profession or to carry on any occupation, trade or business. यार मीनिंग कोन ये हमको कंप्लीटली अथॉरिटी दोउची एनी प्रोफेशन एक्सेप्ट करिया पय एनी प्रोफेशन स्टार्ट करिया पय इन इंडिया बट या सहित एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन भी अछि प्रोफेशन दोउची डजंट मीन कि मु कहिबी खाली मते सर्जरी करिवार अछि सर्जरी करिया को भल लागुची तो मु ऑल ऑफ सडन आई विल स्टार्ट ब्रेन सर्जरी ऑफ अनदर पर्सन तो एई जगह रे जोटी प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन दरकार सर्जरी करिया पय जने सर्जन हेतिबा दरकार एमबीबीएस एमएस पढिथिबा दरकार तो जदि सेति के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नाही ताले से प्रोफेशन को से एक्सेप्ट करि परिबो नाही बा से प्रोफेशन से करि परिबो नाही अदरवाइज जहा जो जगह रे सेमति किछ रेस्ट्रिक्शन नाही कि टेक्निकल रिक्वायरमेंट नाही बा नॉलेज सेमति किछ स्पेसिफिक नॉलेज दरकार नाही एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमें प्रैक्टिस करि परिबा एनी प्रोफेशन एनी ऑक्युपेशन वी कैन प्रैक्टिस. So this is a brief discussion related to Article 19 of the Indian Constitution. हमें freedom of speech and expression discuss कले या सहित प्रत्येक क्लॉज को यार डिस्कस कले किछि केस स्टडीज भी मु कहली लाइक कन्या कुमार केस रमेश थापर केस ये सब केस स्टडीज को मन रखिबे. सी whenever you are writing any answer in your mains examination always dynamic करि परिबे केमति constitution polity ए आंसर को केमति dynamic करि परिबे ना किछि केस स्टडीज दियंतु बा किछि नुवा वर्डिक्ट आछि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट अछि किछि लेटेस्ट वर्डिक्ट अछि से सब वर्डिक्ट को यूज करंतु so that your answer will be enriched ताको यूटिलाइज करंतु. Next, one by one, each and every topic I will cover in Unacademy Plus. जो माने plus रे नांती से माने they may join to Unacademy Plus by using the subscription link I have given in the description box. So you can follow me. Link दे देते description box रे link भी दिया जाय छे. Plus you can use the referral code EGOS to get subscription to Unacademy Plus.
So thank you everyone, thank you very much. In the upcoming classes I'll be coming with some other lessons. Have a good day.